Hello dear students, today we are going to start the topic electromagnetic wave. Okay, say it is only in the mains and NEET syllabus, not in advanced. Okay, so we come to the electromagnetic wave, EM wave, and it is the first lecture. Okay, say light is electromagnetic wave, means light has both electromagnetic wave has both electrical and the magnetic nature. Okay, both electrical and the magnetic nature. Okay, next the electrical A and magnetic B wave planes are always in the same phase. ये एक ही फेज में होंगे. ठीक है, फेज अभी मैं बता दूंगा. 11th में आपने वेव्स किया है, तो वेव्स फंक्शन, वेव फंक्शन एंड वेव इक्वेशन दोनों ही वहाँ किया था. तो साइन या कोसाइन के बाद जो भी वैल्यू आता है दैट इज कॉल्ड द फेज ऑफ वेव. ओके, फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर and the velocity of light are perpendicular to each other. Okay, the electrical wave intensity, magnetic wave intensity and the velocity of light, these all are perpendicular to each other. Okay, see, if this line is E vector, this line is B vector, then velocity of light, तो ये तीनों ही एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. These all are perpendicular to each other. Okay, तो suppose this coordinate is x, this one is y and this one is what, z. तो फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर y में है एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज अलोंग z कोऑर्डिनेट, ओके, देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इज अलोंग व्हाट, द x कोऑर्डिनेट. ओके, नाउ सी वेव फंक्शन, थोड़ा मैं 11th का ये बता देता हूँ माइनर पार्ट. वेव फंक्शन, y is the function of ax plus minus bt. It may be also written as f of x plus minus bt. Okay, so here v is the speed of wave in the direction of propagation. It is coefficient of t by the coefficient of x. So what is coefficient of t here? It is b, and what about coefficient of x? That is what, a. Okay, or in case f of ax plus bt, यहाँ अगर साइन क्या हो, पॉजिटिव हो, then direction of propagation is along negative x coordinate. Okay, it implies that the direction of propagation is along नेगेटिव x कोऑर्डिनेट. और अगर ये f of ax माइनस bt है,
it implies that the direction of propagation is along पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट. ओके, तो ये इंफॉर्मेशंस हमारे पास है. हेलो, तो DOP इज व्हाट हियर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. तो AX और BT के बीच अगर साइन पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज अलोंग नेगेटिव x कोऑर्डिनेट. वहाँ वेव्स में तो जो हम बताते हैं कि हाउ इट इज, एंड जब AX माइनस BT है then direction of propagation is along the positive x coordinate. Okay, and coefficient of b by coefficient of t by coefficient of x that is b by a is the speed of the wave. Okay, तो हम अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिटेल्स में आते हैं. तो सी लाइट हैज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर. इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक वेव प्लेन्स आर ऑलवेज इन द सेम फेज. अच्छा, यहाँ जो AX प्लस माइनस BT होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट द फेज ऑफ द वेव. ये जो टर्म हमने लिखा AX प्लस माइनस BT प्लस माइनस थीटा, साइन या कोसाइन के बाद जो भी वैल्यू होता है द एंगल वैल्यू दैट इज कॉल्ड व्हाट द फेज ऑफ वेव. Okay, and theta is called the initial phase. Okay, theta here is called initial phase. Okay, अब हमने जैसे लिखा y is equal to a sin kx minus omega t and plus theta. So it is the equation of the wave. It is a wave equation. Okay, यहाँ जो है ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज अलोंग x कोऑर्डिनेट. A is what the maximum displacement from the mean position. Here A is called the amplitude of the wave. साइन या कोसाइन के बाद जो भी वैल्यू है लाइक kx प्लस माइनस ओमेगा t प्लस माइनस थीटा is called the phase. Okay, and theta यहाँ पे क्या हो गया हमारा, that is the initial phase. तो theta is equal to, theta is called the initial phase. तो यहाँ देखें here phase value is what kx minus omega t plus theta. What is initial phase here? यहाँ तो plus minus initial phase here is plus theta. Okay, and what is the speed of wave here? Speed of wave, that is the coefficient of t by coefficient of x, that is omega by k. अब देखें ओमेगा आपको पता है it is 2 pi mu and k is what 2 pi by lambda. तो we have the result what lambda mu. तो you know the formula v is equal to lambda into mu. अब बिल्कुल बेसिक अगर समझना चाहते हैं तो see it is one complete wave. यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट लैम्डा और टाइम कितना लिया इसने t. तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव हियर, दैट इज लैम्डा बाई t एंड रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. दैट्स व्हाई वी राइट v इज इक्वल टू लैम्डा म्यू. ओके, तो अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे आते हैं. Suppose this coordinate is y, this coordinate we have x positive, it is y positive, and this coordinate we have z, it is z positive. Okay, now we have two waves, one is electrical and the other one is magnetic. मैं एक ही साइकिल ले रहा हूँ. तो इलेक्ट्रिकल वेव प्लेन इज xy. ओके, एंड एक मैग्नेटिक वेव प्लेन लिया.
it is the magnetic wave plane. Okay, it is magnetic amplitude, and it is electrical amplitude. The wave planes are perpendicular to each other. What is this angle? This angle is 90, and similarly 90. Direction of propagation. C. What is C vector? It is the speed of light. अगर velocity vector देखें तो it is C I cap, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second in space. I cap meter per second, ये space में है. Okay, and one wave is electrical. तो electrical wave को हमने लिखा E vector is equal to E naught is the maximum amplitude. Okay, electrical amplitude E naught sine of kx minus omega t, because direction of propagation is along positive x coordinates, that's why we have taken negative sign. यहाँ initial phase क्या है? It is 0. It is 0, and electric field amplitude is along y coordinate, that's why we have taken g cap. Now we come to the magnetic field. Vector B is equal to B naught sine of, they have equal phase. तो यहाँ अगर phase kx minus omega t है तो here also phase is kx minus omega t, and magnetic field amplitude is along z coordinates, that's why we have taken k cap. तो हमारे पास कौन कौन से रिजल्ट्स है अब देखें. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ए नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी एंड जे कैप. मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी and k cap. And what about the velocity of light? That is ci cap. Okay, direction of propagation चूंकि नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट है. what is the value of c? c यहाँ पे तो स्पेस है हमारे पास, that is equal to omega by k. Okay, that is also E by B, and it is also 1 by under root mu naught epsilon naught. It is E naught by B naught. Okay, इसका भी डेरिवेशन भी हम करेंगे. ओके, कोएफिशिएंट ऑफ t by कोएफिशिएंट ऑफ x, that is ओमेगा by k. ठीक है, तो इट हैज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, यहाँ से भी शो हो रहा है और यहाँ से भी शो हो रहा है. ओके, तो दिस वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. एक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स वाई प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन व्हाट, द एक्स जेड प्लेन. तो इट हैज एक्स वाई प्लेन and the magnetic field has what, the x direction of propagation is along the positive x coordinate. तो अगर E naught का वैल्यू नोन है तो वैल्यू ऑफ E naught इज इक्वल टू C इंटू B naught. ओके, now we come to a concept of displacement current, that is ID. Okay,
कैपेसिटर जब स्टेडी स्टेट में है तो नो करंट फ्लोज टू द कैपेसिटर, बट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल or charge is variable, means charge is flowing in the circuit during the charging or discharging of capacitor. So during the charging process, one extra current is produced, and that is what? The displacement current. So say during the variation of charge across the capacitor, displacement current is produced. Okay, like we have a parallel plate capacitor, and it has been taken in the charging process. Resistance of the external circuit is suppose R, and the key is closed at time t is equal to 0. Key is closed at time t is equal to 0. Okay, so now see, after the key has been closed, the charge across the plates increases from 0 to maximum. To charge across capacitor increases from 0 to maximum, and during the charging process charge at any time t is q naught 1 minus e to the power minus t by tau. ये charging and discharging of capacitor में हमने करवाया था, where q naught is what? Q naught is the CE. Suppose supplied EMF here is what? E. And what is tau? Tau is time constant, that is equal to C equivalent into R equivalent. ये सर्किट को थेवेनाइज करके जो है बताया था मैंने, हाउ टू फाइंड द टाइम कांस्टेंट. ठीक है, so it is here 1C and 1R we have. Okay, so this one is the charge across capacitor at any time t during the charging process. So due to this variation of charge, electric field between the plates will be also what? Variable. So here suppose here negative charge okay, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एंड इंडक्शन से यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग. इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज व्हाट? E. तो वी कम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. Now see, during charging process, electric field at any time t between the plates is equal to qt by a epsilon naught, that is q by epsilon naught. A is the area of each plate. तो electric field क्या होता है between the plates? That is sigma by epsilon naught. And what is sigma? That is q by a epsilon. That's why we have taken this value. Okay, so that is qt is q naught 1 minus e to the power minus t by tau and divided by what? A epsilon naught. That is the electric field. Okay, now see, from here you may write epsilon naught into
electric field into area, electric field at any time t, and that is equal to what? Qt. So it is what? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो अगर यहाँ मान लीजिए कि इक्वल एरिया का कोई अगर हमने लूप लिया, ठीक है, इट इज़ अ लूप ऑफ इक्वल एरिया, दिस लूप हैज़ ऑल्सो एरिया ए एंड इट हैज़ बीन कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर. ओके, तो इस लूप के क्रॉस फ्लक्स इज वेरिएबल ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ व्हाट? द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो QT we have what? Epsilon naught into flux passing through what? This loop, that is what? Phi e. Okay, and that is equal to QT. Now rate of change in current is called what? Charge is called what? Current. So say it implies that I, that is displacement current, is equal to, it is produced due to the variation of charge across the capacitor plate or variation of the electric field. Here E is what? The time variable electric field. It is, say, electric field here is the function of time because charge is also the function of time. So that is what? Epsilon naught into d phi E by dt. So this current is called the displacement current. Okay. Okay, where phi e is the function of time, it is electric field at any time t into area, that is the function of time. So the time variable electric field, see, time variable electric field produces what? The displacement current. So it implies that the displacement current is produced due to time variable electric field. Okay, तो see we have due to time variable electric field displacement current is produced. ये हमने derive कर लिया result. Okay, तो जब यहाँ करंट प्रोड्यूस होगा तो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड विद द लूप will be giving you the deflection. The deflection shows that a current is produced within the loop and that current is called the displacement current. और अगर current है तो किसी भी point पे you may get the surrounding the plates magnetic field intensity का value आप easily find कर सकते हैं. Okay, उसके लिए we will have to use what? The Ampere's Maxwell law. So we are coming to the Maxwell's equations now. Now we are coming to the Maxwell's equations. Okay, it is contained of 4 equations. First is the Gauss theorem of electrostatics, that is what? Integral over the closed surface E dot dA is equal to 1 by epsilon naught into charge enclosed. Okay, next equation is Gauss theorem for magnetism. See, magnet behaves as a what? Dipole. That's why for a magnet, magnetic flux is always equal to 0 as magnet acts as a dipole. Okay, now we come to the Faraday's law.
Faraday's law is integral, line integral of electric field over the closed path ADL, that is equal to minus d phi m by dt, that is, so see what we have, it is the magnetic field is the function of time, so time variable magnetic field produces what? Electric field. So see what we have, the time variable magnetic field produces electric field. Okay, and the fourth one is, इसके बाद सबका हम डिटेल्स में जाएंगे. It is the modified form of Ampere's circuital law. Okay, that is what? Line integral of magnetic field over the closed path is equal to mu naught I and plus mu naught ID, that is mu naught I plus ID, where ID is equal to epsilon naught d phi e by dt. अभी हमने किया था डिराइव, it is epsilon naught d by dt pt dot a. Okay, तो time variable, it implies that the time variable magnetic field, electric field, it is time variable. Electric field produces magnetic field. Okay, and here ID is called what? The displacement current. ये मैंने आपको बताया था. तो this term ID is the displacement current. Okay, अब हम डिटेल्स में आते हैं. So we come to the third formula, that is Faraday's law. What is Faraday's law? That is, time variable magnetic field produces what? The time variable electric field produces magnetic field, और time variable यहाँ पे है, time variable magnetic field produces electric field, that is E dot dl is equal to minus d phi m by dt, that is minus d by dt, it is magnetic field into what? Area. Okay, so we consider an electromagnetic wave. एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमने कंसिडर किया. This one is electrical wave and this one is what? The magnetic wave. Okay, this coordinate is x, this coordinate is y, and this coordinate is the z coordinate. Okay, अब origin से x distance पे we consider a small element at a distance x, we consider a small element. Okay, इस तरीके से of thickness what? Dx.
इसका थिकनेस हमने क्या कंसिडर किया, dx कंसिडर किया. ओके, नाउ वी कंसिडर लूप हियर. दिस लूप इज सपोज p q r s. This one is the loop. Okay, now see, electric field changes with respect to time as well as what position. So what is the value of electric field we have? It is a naught sine of kx minus omega t. And what about the magnetic field? That is b naught sine of, they have equal phase, kx minus omega t. Okay, so at this position, suppose electric field is E, and at this position or QR line, suppose electric field is E plus dE here. Okay, so here electric field is E and here electric field is E plus D. Okay, now we consider this slope. Okay, और यहाँ पे हमने ये y कोऑर्डिनेट में है, तो दिस साइड इज सपोज y. ये किसी भी पोजीशन पे आप यहाँ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो दिस साइड इज y वी हैव. ओके, तो यहाँ हमने एक एलिमेंट लिया, दैट इज रियल. यहाँ एक एलिमेंट लिया, हियर वी कंसिडर एन एलिमेंट, और यहाँ भी एक एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं. ओके, EDL is line integral of electric field over the closed path. तो what is EDL? EDL is line integral of electric field over the closed path, and that path is what? PQRS. Okay, PQRS. Okay, अब यहाँ देखें, we start from P to Q. तो ये DL and it is the direction of DL and it is the direction of electric field. तो यहाँ पे electric field और DL perpendicular है, and here also electric field and DL are perpendicular. तो इन दोनों arms के लिए line integral will be what? 0. तो here for E plus DL, DE, E plus DE and DL are in the same direction. Electric field amplitude तो इसी direction में along y coordinate, और DL भी y coordinate में है, तो it is E plus DE. Okay, into DL इंटीग्रल अगर आप लेते हो तो DL इंटीग्रल भी है व्हाट, y, इट इज y. ओके, प्लस 0, इसके लिए 0 है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड DL एलिमेंट आर परपेंडिकुलर. यहाँ देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है एंड DL नीचे है हमारा, दैट्स वाई इट इज माइनस E into y. इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज E. विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है, तो यहाँ हमने लिया E, और dx डिस्टेंस के बाद क्या ले लिया है, E plus D. And for this element PQ also electric field and DL are in the perpendicular direction, so it is 0. So what we get, E dot DL is equal to EY plus DEY minus EY, that is what, Y into D. Okay, now we get the value of what, the flux here. So we get the value of magnetic flux. Okay, so magnetic flux we will have to find about what, this area. For this area we have to find the value of what, magnetic flux. To see a magnetic field is in what direction, so magnetic field is along the z coordinate. Okay, it is the direction of मैग्नेटिक फील्ड. तो सपोज इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड वी हैव व्हाट, B. इस तरीके से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा चेंज हो रहा है, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया पे सपोज क्या है, B है. तो सी द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर. जैसे मैंने ये वाला एरिया वेक्टर लिया, दिस वन इज एरिया वेक्टर, this length is dx, it is y. So what is the value of area here, it is y into dx. And magnetic field is perpendicular to this, magnetic field perpendicular है इसका, तो magnetic field outside the plane of paper we have. Okay, so that is B. So what is the value of the magnetic flux? So also magnetic flux we have magnetic field B into y into what, dx. Now putting these values, suppose this one is what,
इक्वेशन 1। तो इन वैल्यूज को जो है हमने कहाँ पुट किया, इक्वेशन 1 में पुट किया। इट इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया वी हैव व्हाट, ydx। तो नाउ वी कम टू द रिजल्ट। Now putting the results, putting the results in equation 1, okay। So what is E dot dl? E dot dl we have y d is equal to minus d phi m by dt, so that is d by dt into b by dx। So what you get, y and y get cancelled, so we get the result d by dx is equal to minus dB by dt। Now we have both the values of electric field as well as what, the magnetic field। So now see, putting the values of electric and magnetic field, electric field क्या था, it was E naught sin kx minus omega t, and what was the value of magnetic field, it was B naught sin kx minus omega t। So from this result we have what, d by dx electric field E naught sin of kx minus omega t is equal to minus, in place of b we may write what, b naught sin of kx minus omega t। तो what result we get, it is differentiated with respect to x, तो टाइम यहाँ हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो you get the result e naught k sin of kx minus omega t, that is equal to, और यहाँ पे इट इज़ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो x को कांस्टेंट लेंगे और टाइम को वेरिएबल लेंगे। तो इट इज़ माइनस ऑफ माइनस, इट इज़ प्लस बी नॉट ओमेगा कॉस ऑफ, अच्छा ये साइन था, साइन का डिफरेंशियल वैल्यू कम्स इन कॉस, कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। तो व्हाट वी गेट, ओमेगा बाई के is equal to E naught by B naught, and you know that omega by k is what, the speed of light। तो यहाँ से हमारे पास speed of light का derivation मिल गया, okay। तो light has both electrical as well as what, the magnetic behavior, okay। तो it is what, the Faraday's law। और एक मैं ये भी डिस्कस करूँगा, जैसे यहाँ क्या बताया है, टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो इस पार्ट पे भी हम आएंगे, फिर दूसरा वाला डेरिवेशन पे आते हैं। नाउ वी कम टू द एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, दैट इज व्हाट, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ओके। Now we come to the fourth equation, that is Maxwell Ampere's law, that is what, BDL is equal to mu naught ID, that is mu naught epsilon naught d phi e by dt, okay। तो again we come to what, an electromagnetic wave x coordinate, direction of propagation of light, and along y coordinate we have electric field, एक ही लूप हमने कंसिडर किया, and it is y positive, and this one is what, the magnetic field,
Okay, so electric wave we have E naught sine kx minus omega t, and magnetic we have B naught of sine kx minus omega t. So now here also at a distance x we consider a small element, okay, of thickness what, dx. This thickness we have what, dx. Now at this point suppose the magnetic field is B, and at this point magnetic field is suppose B plus dB, okay, and this y height, okay, this coordinate is what we have, this one is z. तो suppose ये कितने distance पे हमने लिया, it is taken at a distance what, z. तो इस part का हमने length क्या consider किया है, z consider किया है, तो we come to this part, it is z, and this thickness we have what, dx. तो यहाँ we consider number of elements now, okay, तो इस तरीके से लिया हमने, यहाँ एक एलिमेंट लिया, इट इज कंटेन ऑफ नंबर ऑफ फोर एलिमेंट्स, और इस तरीके से लिया, ओके. तो फॉर दिस पार्ट BDL is what, magnetic field here is B plus dB, it is B plus dB into what, Z. For this part the result is B into Z. इसके लिए क्या हो जाएगा, 0, because B and DL are perpendicular to each other, और इसके लिए भी रिजल्ट क्या है, 0. तो what is the value of the line integral of magnetic field for this loop, इस लूप को भी हमने नेम किया, it is PQ RMS. so it is PQ RMS, okay. तो for this loop BD dot DL for what loop, it is PQ RS. we have B plus DB into Z, और इसके लिए अगर एक के लिए पॉजिटिव है तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा इसी डायरेक्शन में, दैट इज माइनस बी जेड. तो माइनस बी जेड वी हैव, द रिजल्ट वी हैव व्हाट, Z into dB, okay. Now we come to the value of flux for this part. So electric flux for the part PQ RS, that is what, electric flux we have to get. तो electric field यहाँ कौन सा डायरेक्शन में है, it is in the upward direction, okay. तो electric field and area are in the same direction, तो electric flux is equal to electric field into area of this part. electric field is in this direction and area भी इसी direction में है, तो area is Z into what, dx. so that is Z into dx, okay. Now putting these values in equation what, 1, it is equation what, 1 suppose, okay. अब इसी क्वेश्चन में पुट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट हम फाइंड करते हैं, okay. Now putting the results, in equation 1. So what we get, in place of BDL we have what, Z dB, okay, and is equal to mu naught epsilon naught. In place of phi E we have what, Ez dx, so it is Ez dx, okay. So Z and Z get cancelled, so we get the result
dB by dx is equal to mu naught epsilon naught and dE by dt. Okay, now putting the values of E and B, to say E is equal to E naught sine kx minus omega t and B is equal to what? B naught sine of kx minus omega t. Now putting E is equal to E naught sine of kx minus omega t and B is equal to B naught sine of kx minus omega t. So what we get? D by dx B naught sine of kx minus omega t is equal to mu naught epsilon naught and d by dt, that is E naught sine of kx minus omega t. Okay, now solving, here t is constant and x is variable, we get the result b naught x cos of kx minus omega t and that is equal to mu naught epsilon naught. It will be what? It is minus E naught omega and cos of kx minus ओमेगा टी. नेगेटिव साइन कहीं बीच में छूटा होगा तो यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा हमारे पास. तो व्हाट वी गेट, these results get cancelled. Okay, so result we have E naught by B naught. It is B naught K here. Okay, so E naught by B naught is equal to it is omega by K it is taken this side. It is K by omega and into mu naught epsilon naught. Okay, we have the result B naught K is equal to mu naught epsilon naught into omega. Okay, or E naught by B naught is equal to E naught by B naught, that is equal to K by omega 1 by mu naught epsilon naught. Okay, and you know that E naught by B naught is called what? The speed of light. Okay, the speed of light c into omega by k, that is equal to 1 by, and omega by k is also what? The speed of light. So here we have c square is equal to 1 by mu naught epsilon naught, or you get the result c is equal to 1 by under root mu naught epsilon naught. So c, it is the second derivation for c. One was c is equal to E naught by B naught, और यहाँ से हमने डिराइव कर लिया c is equal to 1 by under root mu naught epsilon naught. It is the speed of light in space. मीडियम में ये चेंज कर जाता है, स्पेस में सबसे ज़्यादा है. ओके, तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट्स मिला. एक तो रिजल्ट डिराइव किया E नॉट बाई B naught, it is from Faraday's law, and c is also 1 by under root mu naught by
mu naught under 1 by under root mu naught epsilon naught. It is from amperes Maxwell. Okay. C in the medium is equal to electric field in the medium divided by magnetic field in the medium, and that is also 1 by the permeability of medium and the permittivity of medium. Okay. C in space is greater than C in the medium. Okay. Now we come to the more results. फिर हम energy density पे आएंगे, average energy and intensity of light and the luminous force. See, from Faraday's law we have what? Integral E dot dl is equal to minus d by dt phi m, that is also minus d by dt b dot e. Magnetic field is the function of time here. So what we get? The time variable magnetic field produces electric field which has non-conservative nature. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, लेकिन अगर टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स जेनरेट होता है तो दैट विल हैव नॉन कंजर्वेटिव नेचर. Non-conservative nature, and also electric lines of force are circular loops. ये इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन में ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ठीक है, तो लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप्स कभी नहीं बनाते हैं, बट टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जनरेट होगा दैट इज दीज आर व्हाट? सर्कुलर लूप्स. ओके, दीज आर क्लोज लूप्स. तो हम कैलकुलेट करते हैं, है ना. Induced electric field E will have the direction of induced current. जिस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट होगा उसी डायरेक्शन में हमारा इंड्यूस्ड EMF इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा. ओके, तो सपोज वी कम टू अ क्वेश्चन से, और प्रीवियस ईयर में 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन, तो आप इजीली कर सकते हो. ओके, वी हैव अ सिलिंड्रिकल सेक्शन ऑफ रेडियस सपोज r. Is a cylindrical cross section. Cross section of the cylinder is circular of a radius r we have. Okay, and here magnetic field is B. So see, if magnetic field is the function of time, ये फंक्शन ऑफ टाइम हमने कंसिडर कर लिया. सपोज k इज कांस्टेंट, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
inside and outside the cylinder. तो सिलेंडर का inside and outside we have to get electric field intensity. Suppose we have to find electric field here at point P. Here R is less than what? R, and the other electric field here outside the cylindrical section here, small r is greater than what? Capital R. So how to solve it? So we come to the solution. Firstly, we come to the inner part of the cylinder. So we can take closed path passing through what? The point P, where electric field intensity has to be determined. See, magnetic field is increasing with respect to what? The time. तो टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो नॉर्थ पोल से लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है? डाइवर्जिंग. इट इज कमिंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर. इसका मतलब है कि मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है इसको हम इस लूप की तरफ मूव कर रहे हैं, सेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं. तो अगर हम अकॉर्डिंग टू द लेंजेज लॉ किसी पोल को हम मूव करते हैं लूप की तरफ, तो सेम पोलरिटी इज इंड्यूस. तो यहाँ पोलरिटी कौन सा इंड्यूस हो जाएगा? नॉर्थ. तो करंट विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो जिस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट होगा उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो सी दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन. ओके, तो यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, दिस लाइन इज व्हाट? द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ force. The electric line of force is circular loop and tangent at any point on the line of force gives the direction of electric field intensity. तो electric field intensity यहाँ एक small element हमने consider किया. This small element is what? dl. Okay. तो inside अगर हम लेते हैं तो internal part में magnetic field B is the function of time. Okay. This distance we have R. Induced current का direction में we have electric field that is A inside the cross section and ये dl element है हमारा. E and dl are in the same direction. Okay, तो we have line integral of electric field over the closed path that is equal to minus d by dt magnetic field function of time into what? The area. Okay, A inside dl, these are in the same direction, that is equal to area A. See, area and magnetic field are in the same direction or parallel or anti-parallel. तो यहाँ पे 180 डिग्री है. area is outside the plane of paper observer हमें, magnetic field is inside. It is A into d by dt f of t. EI, what is the length of this closed path? It is 2 pi r is equal to area we have what? Pi r square, area of this loop, into d by dt function of t. Okay, so what do we get? Pi pi get cancelled, ये गया. Induced electric field we have r by 2 d by dt f of t. तो see, electric field inside is directly proportional to r. अगर मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन हमारा गिवन है, दैट वाज गिवन kt, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ei इज इक्वल टू r by 2 d by dt. kt जो भी वैल्यू है पुट कर दिया, तो वी गेट द रिजल्ट kr by 2. ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड द आउटसाइड. इनसाइड हमने कर लिया, अब हम आउटसाइड पे आते हैं. Now we draw a closed path passing through the point P where electric field intensity has to be determined. तो देखिए लाइन ऑफ फोर्स अगेन उसी डायरेक्शन में होगा और टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? द इलेक्ट्रिक फील्ड EO है.
EU, है ना। तो यहाँ पे जो है यूजिंग एम्पियर मैक्सवेल लॉ वी हैव E out dl cos of 0 degree, both are in the same direction, that is equal to what we have, minus d by dt b dot a. Okay, E out, what is the length of this path, that is 2 pi r. अब मैग्नेटिक फील्ड किस एरिया में प्रेजेंट है, दैट वी हैव टू सी। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द कैपिटल आर एरिया, तो इससे बाहर वाले एरिया को आप लेंगे नहीं, है ना। तो दिस एरिया वी हैव व्हाट, पाई आर स्क्वायर डी बाई डी टी एफ ऑफ टी। मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया दिस आर एंटी पैरेलल, 180 डिग्री है, पाई पाई गेट कैंसल्ड, तो वी गेट द रिजल्ट ई आउटसाइड इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2r d by dt function of time. So now see, electric field intensity outside is inversely proportional to r, और वहाँ क्या था inside, it is directly proportional to r. तो function of time magnetic field given है kt, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा E out is equal to r square by 2r d by dt kt, and that is equal to what, kr square by 2r. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वी हैव कि आर स्क्वायर बाई 2r, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ओके, तो जैसे टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इन द सेम वे वी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग व्हाट, द टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये हमारा कौन सा लॉ था, इट वाज फैराडेज लॉ। ओके, और वो एम्पियर सेकेंड लॉ से हम टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। ओके